These institutions are creating a new India. When we talk about Swaraj, it believes in Swavalamban, it believes in Swadeshi, it believes in Sthani Rozgar. Swaraj is a new India. And this is where the government takes on the role of Jambant. And I would like to recite a favorite phrase of mine from Ramayana. Kaha reechpat sun hanumana, ka chup saad rahi balmana. Pavan tanay bal pavan samana, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना. हमारे युवाओं में सभी शक्ति है. उस शक्ति को उजागर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार खड़ी है, ताकि हम लोग जामवंत का किरदार खड़ा करें. और मैं ऑपोजिशन से बोलना चाहता हूं, and if anyone wants to see this in action, please come to my Lok Sabha and the 10 districts around. With the Swavalambi Bharat Abhiyan, we have created a movement of enterprise which is creating jobs, and youth are flourishing in that area in their own different ways. I'm not suggesting one way. They're doing it in their own different ways. And to the opposition, and especially to the Congress, I would remind you that be committed to democracy, not to mobocracy. It was an absolutely desperate act to seek asylum outside the Prime Minister's house when your own track record of examination leaves is so abysmal. Everyone was laughing at it because we know that you were in a competitive mode with some other things so that you could show your sympathy. There was no sympathy. If you're not successful at the hustings, do not use the youth as a battering ram for your failed aspirations. You need to examine why you have not been successful in the hustings. You need to examine that. You cannot take this out of this parliament and think that you can make other things. Not only are you playing to their future, against their future, you're also playing into the hands of forces which are trying to slow our country down. And I would say that the East India companies or the internet are again surrounding our nation. They are looking to divide us. And this is where we would say that the new battles of Plassey, which you are in unwittingly, I say unwittingly, you are becoming the new Mir Jafars. And be advised as to what happened to Mir Jafar. You must make sure that we unite so that we do not be divided. I was watching some international channels last week, and I could see them gloat at the difficulties we were having. Let's not fall to that trap. It has been done once before in 1757. Let's make sure that we are a united country. And this is not about us and them. And what Supriya ji said is exactly right. These are both our children. हम दोनों के बच्चे यहाँ पर इसमें कोई हमारा तुम्हारा नहीं है. आइए हम लोग मिलजुल के उनके साथ आगे बढ़ें. मैं यही कहता हूँ कि यह सिर्फ सत्ता पक्ष का व्यवहार नहीं है, ये सिर्फ ट्रेजरी का व्यवहार नहीं है. इसमें हर सांसद को पूछना पड़ेगा. ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है. हर युवा को, हर परिवार को, हर माता को, हर पिता को, हर किसान को, हर महिला को ये कहना पड़ेगा कि हमारे युवाओं के लिए हम ऐसी परिपक्व व्यवस्था करें ताकि उनको चिंता न बने कि अगले वाले समय में उनके पास कैसे आगे बढ़ेंगे. लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, हम लोग को यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने युवाओं को शक्ति दें ताकि वो भारतीय राष्ट्र को बनाने के लिए आगे बढ़े. 15 अगस्त अभी आगे आ रहा है और उसी उपलक्ष्य में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अटल जी की एक बहुत प्रिय कविता आपको बताता हूं. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है. आइए दोस्तों, मिलजुल के अपने छात्रों के साथ चलें, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करें. और जो शपथ हम लोग को हमारे पूर्वजों ने ली थी जब हमारी स्वतंत्रता मिली थी और हमारे युवाओं को लेनी है आने वाले समय में, उसके लिए प्रतिबद्धता से आगे बढ़े. आपने मुझे समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.